So as I was saying, Jayanta Mahapatra is our next poet, and we shall also talk about his poems. So first we sort of try to get an idea about his details, biographical details. So he was born on 22nd October 1928 and expired on 27th August 2023. He was an English poet, and he is the first poet to win a Sahitya Academy Award for English poetry. And his poems like Hunger, Indian Summer, these are regarded as classics in modern English literature. He was also awarded Padma Shri, the fourth highest civilian honor in India, in 2009. And he was a very, defiant person in a way, always opposed the wrong things. So that is why he returned this award in 2015 to protest against the rising intolerance in India. He was from Odisha, and he was also a teacher of physics professionally. And his notable works include Relationship, which came out in 1980. And if we talk about the themes, so basically he explores the themes of cultural struggle, identity, exploration of identity, and displacement in his poetry. He tries to catch the complexities present in the Indian society, and he utilizes imagery and examples from ordinary life and Indian landscapes. And he has a very thoughtful and introspective voice, which basically defines his approach. And some important books of poetry like Close the Sky 10 by 10. Then we have A Rain of Rights, then Waiting, False Start, Relationship, Collected Poems. So all these have been written by him. He has also written some short stories like The Green Gardener, Door of Paper, and also few things in Odia. He's also written Odia as well, and also done some translations. So a very important figure from the Indian English writing perspective, and we are going to deal with 4 of his poems. The first poem that we will deal with is Hunger. It is considered a classic. And the next poem will be Dholi. The third one will be, I think it is Grandfather. And the fourth one, A Country. Okay. The title of the poem is Hunger. And we have to sort of understand here what hunger is all about. So hunger simply means bhook, and we generally associate this hunger with empty stomachs. When we are physically hungry, when we don't sort of have food to eat. So, but if you read the poem, you will find that there are many types of hunger other than the hunger that we are generally accustomed to understand the word, the dictionary meaning of it, but we have many kinds of hunger. So proceed with the poem. How does it start? It was hard to believe the flesh was heavy on my back. So you can see here directly from the very first line that it has first person narration. The poem is in first person because poet is trying to, or the speaker is trying to narrate his own experience. The flesh was heavy on my back. Every word, every phrase here carries a layer of meaning. Flesh was heavy on my back. The fisherman said, will you have her? Carelessly trailing his nets and his nerves, as though his words sanctified the purpose with which he faced himself. It was hard to believe. बड़ा मुश्किल था बिलीव करना, but flesh was heavy on my back. इसका ये भी मतलब है कि बोझ है. फ्लैश माने कि मांस का बोझ कैसा बोझ होगा, मीन्स बॉडी का बोझ. पर बॉडी का बोझ कैसा बोझ है? बॉडी का बोझ बिकॉज ही फील्स फोर्स्ड टू, कंपेल्ड टू डू समथिंग, सम कंपल्शन, बिकॉज बॉडी हैज नीड्स. शरीर की किसी जरूरत को पूरा करना है और वो कंपल्शन उस पर हावी है.
He is overwhelmed by due to this compulsion. And what was this compulsion? This compulsion was of some kind of company, some kind of association. He wants to talk to somebody, he wants to associate or link with somebody, because he is lonely. The speaker feels lonely. The flesh was heavy on my back, mean he feels the sort of overpowering desire to connect with somebody, and he is looking for some connection. तो रैंडम कनेक्शन कहां मिलेंगे? क्या ढूंढ रहा होगा? उसके हिंट आगे मिलते हैं. फिशरमैन सेड, और देखो मछुआरा कहीं तट पे घूम रहा है कहीं उड़ीसा में, और फिशरमैन उसको आके बोलता है विल यू हैव हर, केयरलेसली, ऐसे रूटीन में कैजुअल वे में पूछता है चाहिए वो. देखो हर मीन द फिशरमैन इज टॉकिंग अबाउट अ गर्ल और अ वुमन, अ फीमेल. विल यू हैव हर, ट्रेलिंग हिज नेट्स एंड हिज नर्व्स. शायद उसने बड़ी हिम्मत करके जांच पर रख के, बिकॉज फिशरमैन मे हैव नोटिस्ड हिम, ऑब्जर्व्ड, मे हैव ऑब्जर्व्ड हिम wandering here and there looking for someone, and then he offered this very awkward statement, will you have her? Would you like a girl? Would you like to spend time with a woman or a girl? We don't know yet. Will you have her? Carelessly, casually पूछता है, as if this is his routine. ये भी तो हो सकता है, फिशरमैन की रूटीन है, नॉर्मली पूछ लेता है कैजुअली, हाँ भी लड़की चाहिए, as though his words sanctified the purpose with which he faced himself. जैसे कि शायद उसके शब्दों के पूछने का तरीका, और the words which he offered, will you have her, इन्होंने उस पर्पस को सैंक्टिफाई कर दिया हो, अप्रूव कर दिया हो. माने कि पूछने के तरीके से ही उसने ऐसे पूछ रहा है जैसे कैजुअली है, नॉर्मली है, प्रोफेशनली, एज इफ इट डजंट मीन एनीथिंग. No sin in it, no sort of awkward thing in it that he is trying to offer a girl to somebody who is wandering on the beach. Maybe the beach, maybe the bazaar, we don't know yet, but I saw his white bone thrash his eyes. So I saw his white bone thrash his eyes. It has also layers of meaning. White bone could mean the white of the eye, because he could see, maybe the speaker could see sadness in his eyes or helplessness in his eyes. Maybe white bone here refers to the teeth, the flash of teeth was there. Maybe the person was black and there was only a flash of teeth, means the only white color that you could see in the face. So it has multiple meanings, but here simply means that I saw the white bone thrash his eyes. Yes, yes, yes. Maybe because white bone here refers to the frail body or the weak body that this fisherman carries. Maybe the speaker feels that the fisherman is very poor. This expression might mean that. So it has layers of meaning. In the second stanza, it says, I followed him across the sprawling sands. माने क्या हुआ? स्पीकर मान गया कि ठीक है, लड़की को मैं चल पड़ूंगा मिलने. I mean, he's looking for some connection, looking to spend time with a girl maybe, and now because he has this offer of a girl, he starts following the fisherman. Sprawling sand मतलब बिखरे हुए, विस्तृत रेत, उस पे चल पड़ा, शायद समंदर के किनारे हैं कहीं. My mind thumping in the flesh's sling, और मेरा दिल क्या है, जोर जोर से धड़क रहा है, थंप कर रहा है, ढमाढम बज रहा है फ्लैश के स्लिंग में. स्लिंग माने झूला, तो जैसे शरीर क्या बना हुआ है, झूला बना हुआ, and my mind is thumping in it. Hope ले पड़ा, means point is that he has become very nervous, he has become very excited about it. Hope lay perhaps in burning the house I lived in, और उसको ये भी लग रहा है कि शायद मैं इस डिजायर से, शायद इस ओवरवेलमिंग कह लीजिए इस अर्ज से, सेक्सुअल अर्ज जो वो फील कर रहा है, आई कुड ओनली लिबरेट माई सेल्फ फ्रॉम दिस अर्ज by burning the house I live in. Burning the house I live in by burning the body I live in. Maybe he thinks that at this moment he is thinking about it, that perhaps the only way to get rid of this urge is by consummating it. कि मैं जो भी करना है कर लेता हूं तभी बच पाऊंगा, और otherwise I will be burning in it forever. Silence gripped my sleeves. तो मैं चुपचाप, मतलब मेरे को sleeves माने की कहने का मतलब है कि he is not talking anymore, nervousness की वजह से.
एक्साइटमेंट की वजह से। हिज बॉडी क्लॉड एट द फ्रॉथ, हिज ओल्ड नेक्स हैड ओनली ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सी। तो और वो जो मछुआरा है अपने खाली जाल, जो फ्रॉथ है मतलब झाग है जो समंदर की लहरों से बनती है, उसके ऊपर घसीटते हुए चल रहा है। एंड और उसकी बॉडी जो है ऐसा लग रहा है क्लॉ कर रही है, मतलब कि जकड़ के चल रही है। उसके भी पांव एज इट्स नॉट अ वेरी स्टेडी वॉक, इट्स एज इफ समथिंग इज आल्सो स्टॉपिंग दिस पर्सन। तो चल रहा है वो, ऐसा लग रहा है जैसे उसके पांव झाग में अटक जाते हैं, क्लॉ कर लेते हैं, मतलब पंजों की तरह पांव जमा के रख के चल रहा है। इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज लीन्ड टू ओपन लाइक अ वुंड। लीन्ड टू क्या होती है? शैंटी। शैंटी माने क्या है कि जैसे ये दीवार है किसी तरह की छोटी मोटी, और उसके साथ दो डंडे या पोल खड़ा करके झोंपड़ी जैसी बना दी है। भैया लोग देखे होंगे आपने रहते हुए हमारे यहाँ टेम्पररी शेल्टर कैसे बना देते हैं, छोटा सा शैंटी। I followed him across the sprawling sands, my mind, in the flickering dark, his lean-to opened like a wound। और वो जो जब दरवाजा खोलता है उस शैंटी का, दरवाजा तो क्या ही होगा, पर्दा हटाता है तो जैसे घाव खुलता है ना, कोई घाव के ऊपर से आप पट्टी हटाते तो घाव कैसा दिखता है नीचे शरीर पे, वैसे वो खुलती है। द विंड वॉज आई। पर्दा खोलने वाली हवा कौन थी? मैं ही हवा बन के आया। ये हवा भी नहीं अंदर गई, जब दरवाजा उसने हटाया होगा, वो पर्दा या ओपनिंग बनाई होगी। द विंड वॉज आई एंड द डेज एंड नाइट्स बिफोर पाम फ्रॉन्ड स्क्रैच माई स्किन। तो किससे मिलके बनी है वो दीवारें? किसकी बनाई है? पाम ट्रीज के पत्तों की। वो पत्ते कैसे होते हैं? जैसे नुकीले तीखे होते हैं उसके एजेस। तो जब वो अंदर गया तो पाम ट्रीज वाले वो जो फ्रॉन्ड थे, माने कि जो पत्ते थे उसके तीखे, वो उसको स्क्रैच करते हैं। जैसे आप मक्की के खेत में जाके देखो आजकल स्क्रैचेस लगते हैं ना, उसके पत्ते भी काटते हैं हम, वैसे वैसे, पर पाम ट्रीज वाले और ज्यादा सॉलिड होते हैं। तो पाम फ्रॉन्ड स्क्रैच माई स्किन इनसाइड द शैक। और उस झोंपड़ी के अंदर एन ऑयल लैम्प प्लेड द आवर्स बंच टू दोज वॉल्स। एक ऑयल लैंप वहां जल रहा है और वो उसके मतलब जलने की वजह से क्या हो रहा है कि काली होगी दीवार। तो दैट कुड इंडिकेट द टाइम फॉर विच दैट लैंप वॉज बर्निंग। पता नहीं कितने टाइम से वो लैंप वही है। देखा जैसे जहां कहीं हम आग जलाते हैं तो धुएं से कैसे काली हो जाती है दीवारें, या जहां कहीं आपने धूप बत्ती लगाते होंगे मंदिर में, वहां भी आप देखना काली की जैसी आ जाती है। उससे पता चलता है कि दिस इज द प्लेस वेयर यू एक्चुअली इग्नाइट दोज लैंप्स। तो ऑयल लैंप स्प्ले कर रहा है, बिखेर रहा है मोमेंट्स को, आवर्स को, घंटों को, बंच टू दोज वॉल, जो इन दीवारों से चिपके हुए हैं और उसके ऊपर बंचिंग हुई है, मतलब उनके झुंड है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, एज इफ यू कैन टेल कि बड़े टाइम से यहाँ पे ये लैंप चल रहा है। ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट क्रॉसेज द स्पेस ऑफ माई माइंड। और पूरी शैंटी जो है वो भरी हुई है स्टिकी चिपचिपे सूट से। सूट होता है धुएं के साथ जब वो मिक्स हो जाती है ना, पॉल्यूशन। जैसे आप अपने घर में जहां आग जलाते हैं ना, चूल्हा जलता है, वहां देखना ना, अगर ऊपर आपने स्लेट वगैरह डाल रखे तो स्टिकी जैसा धुआं हो जाता है, चिपक जाता है, मतलब कुछ टाइम बाद धुआं उसके साथ। करा आपने कभी नोट? साफ करने लगते हैं आसानी से नहीं निकलेगा वो, है ना, चिपचिपा जैसा हो जाता है, वो है सूट, स्टिकी सूट। आई हर्ड हिम से माई डॉटर शी जस्ट टर्न 50। क्या बोलता है? मेरी बेटी अभी 15 की हुई है बस। फील हर, जाओ उसको छुओ जाके। आई विल बी बैक सून, आ जाऊंगा मैं जल्दी। योर बस लीव्स एट 9, 9 बजे जाएगी तेरी बस। देखो हिंट कैसे दिया, मेरी बेटी, और बस तेरी कितने बजे आएगी? 9 बजे। जाओ उसके जाके टच करो, छुओ उसको, फील करो, मतलब उसको टाइम दे रही है कि कितना टाइम है तेरे पास। योर बस लीव्स एट 9। द स्काई फेल ऑन मी, मेरे पे तो गिर पड़ा आसमान। ये क्या? एंड अ फादर्स एक्सॉस्टेड वाइल, और एक पिता की थकान भरी मुस्कुराहट या थकान भरा ये जेस्चर, वेयर ही इज ट्राइंग टू ऑफर, और रादर ही इज ऑफरिंग हिज डॉटर, ओन डॉटर एज अ प्रोस्टिट्यूट। नहीं कर रहा ऑफर, आपके सामने ही है। लॉन्ग एंड लीन, हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर। तो लंबी और पतली और उसके साल थे रबड़ की तरह ही कोल्ड, एज इफ नो एनर्जी इन हर। शी ओपनड हर वर्मी लेग्स वाइड, तो टांगे अपनी वो ओपन करती है। आई फेल्ट द हंगर देयर, वहां मैंने भूख महसूस की। द अदर वन, दूसरी तरह की भूख। द फिश स्लिदरिंग टर्निंग इनसाइड, मछली अंदर ही अंदर जो घुमट रही है, स्लिदर कर रही है या चल रही है।
So basically, the last line है the fish slithering turning inside. It is also multi-layered, multi-meaning. It has many meanings. It could be one of the meanings is that it actually signifies the sexual experience that this speaker had with the girl. This could also mean the intricacies or the complexities of the mind of the girl, what she was feeling during the experience. So that sort of ideas are conveyed by the poem Hunger. So very complex poem in a way, a very realistic poem in a way. He does not try to hide anything. He has laid everything bare open in front of you for the reader to examine and evaluate what actually happens. So we see a speaker, we see the poet maybe who is in search of a company, any company that he could get, but he is spotted by some fisherman who offers his daughter. But in the beginning, he does not know that this girl is his relation or his daughter. He simply follows the fisherman in search of some sexual experience. Then he go to a shanty, a lean-to. It's a temporary shelter. There he encounters a girl who is lean and very weak. And this girl, she behaves as if this was a routine for her. She does not show any emotions, as if the poet has not sort of illustrated any emotions on her part. She simply opens her legs and invites him in, and then they have the experience, and that's all. So this is another type of hunger. So there are 2 or 3 types of hunger here that you can sort of get from the poem. First type of hunger is hunger for human contact that the speaker felt, because flesh was heavy on his back. He was overcome by the sexual desire. He was overcome by the desire for contact. Then fisherman, there is a helplessness in his attitude, in his way by which he offers his daughter, because simply speaking, fisherman is weak, he may be poor, and he has no way to earn the money. So simply because his net has been shown as empty, he is trailing the net. घसीट रहा है उसको, he drags the net along. He has not been able to catch any fish. Maybe because that is the only reason he would offer his daughter, so that he could get some money. But there is also hunger. Hunger in, as in, we understand it in society. And third one could be the hunger for, maybe it is the hunger for independence, maybe the hunger to get free from these shackles which the girl feels, or maybe the hunger for sexual contact. So there are 2 or 3 types of hunger in the poem which basically constitute the theme of the poem.